Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Sorry for slight delay. Right, I think everything seems to be fine. I'm properly audible and properly visible without any, what we can say. ठीक है. So सब कुछ ठीक लग रहा है. Everything seems to be fine. Let's have some discussion. है ना? Okay. So, hello, Avich. Hello, Moksh. Okay. चलो, let's start what we are having today. So सबसे पहले तो लास्ट वीक एक होना था सेशन बट आई मिस्ड इट because of some technical reason and some particular schedule issues. But ठीक है, now we are regular, we'll try to be regular. So कुछ major issues थे which we are supposed to discuss. For example, एक issue जो था वो था राघव चड्ढा का. Right. So technically the political experts have said it. He is going to BJP. Yes, because of some reasons. Like from last 2 days, we have seen his timeline. उनके टाइमलाइन में जो भी ट्वीट लाइक पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए थे right, they all are being deleted, even those interview links which were posted by the other leaders of the party, right, those were also missing, and the updates are getting in such a fashion that he's finally getting into the bjp thing. Okay, now there is a divide between all the people, है ना, in such a fashion कि भाई कहीं ना कहीं he was planned, he is something like this, ऐसा है वैसा है. So काफी कुछ चीजें होने के बाद जो है ये पर्टिकुलर चीज आई है कि जो है he is going to BJP, but अभी for now these are just speculations, so we're not going to discuss it again. राइट, एफसीआरए बिल जो है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, राइट, उसका 2026 का अमेंडमेंट आया. वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. Apart from this, Western Asian conflict is going on, so that is going to be one of the point of discussion. And one of the largest thing that we have seen from last 1 week was quite simple, and it was actually the No Kings protest. Yes, the like USA has seen one of the most massive protests in the modern history against the Donald Trump. Yes, my friend, India's friend, जिसने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है. तो उसके अगेंस्ट एक massive protest हुआ which we are going to discuss today. Apart from this, transgender person identification bill जो है उसका भी opposition चल ही रहा है. There are 5 state election which are going on. So वो भी डिस्कस अपन करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, जिससे थोड़ा सा और डिटेलिंग आ जाए. टिल देन असम की वोटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी. So there are some particular issues which you should note down. So Raghav Chadda wala issue is not that important for our particular CLAT exam. बट वट एवर इज इम्पोर्टेंट हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नो किंग्स प्रोटेस्ट. किसकी बात करते हैं हम? No Kings protest की. Yes. So the No King protests are the series of massive nationwide demonstration of United States in the United States, most recently seen in the March 28, 2026, organized by progressive group like Invisible, Move On, and the 50501 movement. ये तीनों नाम ध्यान रखना. Invisible, Move On, and 50501 movement. Then the rallies aim to change the perceived क्या कहना चाहिए authoritarianism style and the policy of second Trump administration. So कहानी पे आते हैं. There are some particular groups and there are some particular people who are not happy with the Trump administration. कुछ चीजें बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल टैरिफ, है ना, जो टैरिफ वॉर था, दैट वाज समथिंग काइंड ऑफ इशू जिसने दुनिया भर में एंड इवन लाइक अमेरिकन्स को भी काफी परेशान करके रखा. बिकॉज ऑफ दोस टैरिफ दे लाइक डोनाल्ड ट्रम्प हैज पुट ऑन द डिफरेंट कंट्रीज. The Americans spent a bit more on buying the same thing which was earlier less costly, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ रहा था उसको टैक्स में ऐड ऑन करके पब्लिक बेच रही थी. सो टैरिफ के कारण लोगों के अंदर काफी गुस्सा आया. उसका इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ा. दीज आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर सेइंग कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिला. Right? So inflation देखने को मिला. Then he promised Americans that the America will get out of all the unnecessary wars which are not America's war.
So after becoming the president for the second time, first of all, he did nothing against the Russia-Ukraine and continuously supporting Ukraine with the finances and weapons. Then come to the Gaza wala thing, and वहाँ पे भी he is continuously supporting Israel. Then comes the Venezuela particular issue, which people didn't like it because Maduro was one of the elected leaders and उसे kidnap किया गया technically. Then comes the final nail in the coffin, that was Iran war. Yes, technically, the CIA and the FBI both have said this. Even the Joseph Kent, who was the like former director of the national intelligence, उन्होंने simple से तौर पे ये बोला, Iran was not at all an imminent threat to America, right? And they got involved because of Israel, right? Because there is a strong Jew lobby which is forcing American administration to get into the war of Israel. Okay, so यहाँ से जो particular चीजें हैं वो शुरू एंड यहाँ से कहानी जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई बिकॉज अमेरिकन्स डोंट आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द current war situation or something because the Americans are not getting out of it. एक जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है वॉर की, राइट, वो अमेरिका की तरफ से जो है वो मिसिंग दिखती है. So American people are not happy with this current administration, and apart from this, Donald Trump's approval rating is continuously getting down and down. There are some surveys which are suggesting the minus 17% popularity. So कहीं ना कहीं ये चीज होनी थी. So by the time of 28th of March, right, approximate 80 to 90 lakh people, right, in 50 different states and thousands of different locations, they gathered against the Trump administration and its idea of being the bully. एंड उन्होंने इस प्रोटेस्ट को नाम दिया नो किंग्स प्रोटेस्ट. क्या नाम दिया? नो किंग्स प्रोटेस्ट, राइट. रीजन क्वाइट सिंपल है कि जितना ज्यादा वॉर पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, दैट इज द लाइक टेक्निकली इट्स नॉट देयर वॉर, तो वो कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल रहा है. एंड दे आर लूजिंग इट बिकॉज भैया उनका पैसा है नहीं. सेकेंड थिंग, द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज ऑफ दिस द लोकल गैस प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस आर गेटिंग हायर हायर, and if the local transport is getting costly, that means the things which are needed daily on the daily basis, they are getting costly. So कहीं ना कहीं उस वॉर का जो सेटबैक है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो पब्लिक उठा रही है. तो ये प्रोटेस्ट जो है वो सामने आई. I'm pretty much sure you have seen the visuals, the videos of this particular protest. I cannot show those particular photos or visuals here, you know, but I'm pretty much sure that you loved it. है ना? So estimated turned out to be approximately 8 million, which is 80 lakh, right? Participant across the 33 sites nationwide, making it one of the largest single day protests in the US history. राइट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे प्रोटेस्ट रही है किसकी? यूएस हिस्ट्री की. राइट. प्रोटेस्टर्स रैलीड अगेंस्ट द ईरान वॉर, है ना, इंटेंसिव आइस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट. नाउ व्हाट इज आइस अगर बात करें तो इट्स अ फोर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स पे क्रैक डाउन करती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लोकल अथॉरिटीज, लोकल पीपल आर गेटिंग पिस्ड, क्योंकि ये किसी के घर में भी घुस जाते हैं, किसी के यहाँ भी किसी को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं. सो आइस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट एंड ईरान वॉर के अगेंस्ट दिस वाज द प्रोटेस्ट. द फीटल शूटिंग इंडिविजुअल लाइक रेने कूड एंड एलेक्स प्रेटी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनके अगेंस्ट आइस ने शूट डाउन किया था और उनको उनकी डेथ हो गई थी. Right. The large crowd gathered at the Lincoln Memorial and marched across the Memorial Bridge. And Lincoln Memorial is one of the particular symbol in the history, जहाँ पे वो freedom, वो particular equal rights, और इन सारी चीजों की बात होती है. The flagship event featuring the speakers like Bernie Sanders, right, and a performance by the Bruce Springsteen. और ये लोग भी उस particular उसमें थे. Now the thing is कि what is the difference between India and USA? इंडिया में सेलिब्रिटीज डोंट कमेंट ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज. यूएसए में सेलिब्रिटीज कमेंट ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज, right? They put their views on those issues because they are free over there, they have freedom of expression. The kind of protest that happened in America, अगर वो प्रोटेस्ट इंडिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती, भरोसा करो इतने सारे लाखों लोग जेल में होते कि तुम सोच भी नहीं सकते. Yes, you have seen the visual, the way things are, like Trump is eating shit and getting shit.
out of his mouth and some other particular thing. So वो काफी चीजें रही. There were certain clashes over the police and protesters. For example, रॉबर्ट आर चर्च पार्क यहाँ पे जो है वो डिस्प्यूट के कारण कुछ लड़ाई झगड़े खून खराबी भी हुए. There were large rallies in New York City, Los Angeles, Chicago, Boston and Sacramento. तो कई पर्टिकुलर बड़ी सिटीज में बड़े मेमोरियल में बड़ी चीजें हुई. अब talking about its historical context, right? The No Kings movement began in June 2025 on the 79th birthday of Donald Trump. So ये आज का नहीं है, ये एक साल भर पुराना मूवमेंट है. There are three phases जिसमें चीजें हुई, है ना? The first phase was on the June 14, 2025. Correct. This was the birthday जहाँ पे approximate 40 lakh to 60 lakh participants were there. In the October 18, 2025, there was 70 lakh participant over there. And March 2028, 2026, there were 80 lakh participants. The moniker No Kings reflect the protesters' rejection of what they described as monarchical or absolute executive power, with slogans emphasizing democracy, not monarchy. So, अब इसका एक सिग्निफिकेंस समझते हैं. द थिंग इज कि अमेरिका में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जो है वो दो पुल में डिवाइडेड होती हैं. एक होता है यूएस प्रेसिडेंट, right? And then there comes the Congress. So technically, US is federation of states where states have individual rights, individual constitution as well. For example, अगर homosexuality की बात करें तो there are like states like Miami where it is legal. There are states like Texas and some others जहाँ पे वो illegal है. So similar sort of thing but different kind of rules. So they have their authority that belong to the Congress and Vice President. राइट. ऑन द अदर हाफ देयर आर सर्टेन एग्जीक्यूटिव पावर जो यूएस प्रेसिडेंट को भी बिलोंग करते हैं, सो दैट इमरजेंसी केसेस में उनको यूटिलाइज किया जाए. यूएस प्रेसिडेंट विदाउट एनी इमरजेंसी, चाचा ट्रम्प, राइट, ही इज यूजिंग इट फॉर लाइक, वो उसका एक फेमस वीडियो वायरल है ना, पिंग 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 शू, राइट, दैट इज लाइक दिस. तो दे वांट कि भैया डेमोक्रेटिक फैशन में काम हो. द कांग्रेस शुड बी हेल्ड लाइक अ प्रॉपर डिस्कशन, देन they should actually discuss the decision, then they should make decision. But Donald Trump is like, yeah, I'm going to do whatever I want. अभी हम जब वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट की अपडेट वो करेंगे, क्या कहते हैं, पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है. ओके, द लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर बात करें तो ओवरऑल फैशन में थ्री प्रोटेस्टर्स appeared in the court of the Memphis following the clash between the Memphis Police Department during the No Kings Day March. There are some particular other clashes, but majorly there are like peaceful, but there are people who got arrested. For example, लॉस एंजलिस में 74, डेनवर में 9, पोर्टलैंड एंड डालस में एक एक लोगों को वो किया गया. राइट. ऑर्गेनाइजर ग्रुप लाइक जो इनविजिबल है, 5051 501 मूवमेंट है, द मास कॉल फॉर टुडे एंड दे वांट टू मेंटेन द डेकोरम and they want to maintain that momentum which is like currently happening to 2026 midterm election. अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प को थोड़ा सा लॉस होता है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा वो होगा. तो दैट वाज व्हाट द नो किंग्स प्रोटेस्ट हैपन इन अमेरिका, है ना? अब जो अमेरिकन वो है, क्या कहना चाहिए, वो हैं, क्या कहना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफिस जो व्हाइट हाउस है, उनकी तरफ से जो वो है एबिगेल, जो स्पोक्स पर्सन है एबिगेल जैक्सन, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ट्रम्प डिस लाइक डिराइंजमेंट थेरेपी सेशन, राइट, लेफ्टिस्ट फंडिंग नेटवर्क. सो दे काइंड ऑफ, उन्होंने वो जो क्रेडिट करने का होता है ना कि भाई आप मिसक्रेडिट कर दो, डिसक्रेडिट कर दो, उन्होंने वो शुरू कर दिया कि जो यूएस का व्हाइट हाउस है, दे हैव सिंपली सेड कि भाई साहब ये जो है ये लेफ्ट विंग वालों का काम है एंड डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिक्स को, कि दिस गाय लाइक डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड अब्यूजिंग टू ऑल द पार्टीज, ऑल द आइडियोलॉजीज, क्योंकि उसको लगता है कि वो सही है. तो उन्होंने भी यही काम किया. उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि दिस इज ट्रम्प क्या कहते हैं, डीअरेंजमेंट थेरेपी सेशन, राइट, नथिंग मोर देन दिस. नाउ दिस वाज अ कार्टून जो कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स में इन कई जगह पे शेयर हुआ था. सो आई डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट दिस. हाय प्रेरणा, यस यस यस, दैट इज लाइव. तो तुम्हें क्या लग रहा है ना? सो ये काफी वाइब भी हुआ था, वो था, वायरल भी हुआ था. सो आई थॉट व्हाई नॉट वी गेट इट फॉर यू. लुक नो क्लॉथ्स का सीधा मतलब ये है कि भाई के पास किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं, राइट. एंड द ट्रम्प्स आइडिया ऑफ बीइंग नो शेम इज समथिंग लाइक दिस कि भाई आई एम द एम्परर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ.
So that was the King's No King's protest. Now let's get into some Western Asian conflict update. I'm pretty much sure you have some updates. And सबसे ज्यादा जो टॉप पॉइंट था है ना पिछले 2 दिनों में about this particular conflict was a language used by Trump. Yes, technically we are education institutes, so we cannot show you that particular language, or I cannot tell you about that language. But he used some F words, some B words, and काफी चीजें, right? He said कि भैया open the Strait of Hormuz within 48 hours, or I'll unleash hell kind of thing. और जो जिम्बाब्वे की ईरानियन एम्बेसी है, उन्होंने जो है they replied on this particular tweet with a very hilarious way. They said we lost the key. सो एक साइड भाई जो है कह रहा है कि ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट, एंड दूसरी तरफ जो पर्टिकुलर वो है क्या कहना चाहिए ईरानियन है, दे आर रिप्लाइंग वी लॉस्ट द की. प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ. ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया. ईरान सेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाज नेवर क्लोज्ड, राइट, एंड इट्स स्टिल ओपन, but only for those people who are friendly to Iran. Right? Anybody who's supporting Iran's enemy, or anybody who's like aligning their mutual interests with the enemy country, they, for them the strait is not at all open. Right? So, अब question Iran to America hai, like in American public, there is a question: if Strait of Hormuz was open and still open, why Americans are fighting in Iran? Why Donald Trump want to have boots on ground? Yes, matlab if everything seems to be fine, everything is okay, and once you said ki we won the war at the first hour, and from like first 15 days of the war, you have already declared yourself as the winner, right? Then how and why you are invading on the ground? So काफी चीजें हैं जो अब क्वेश्चन होने लगी हैं ट्रम्प की तरफ से. The military experts are saying simple things, right? First of all, there was no motive for this war for America, right? They get involved because Israel wanted them to get involved. Kyun? I don't know. Is there anything like Epstein file or anything like blackmail or anything else? No idea. Now, they are involved into the war, but they don't have any particular exit strategy. Yes, they were simply given a particular, what we can say, intelligence that if you will attack in a precise way and if you will kill the supreme leader, there was a protest that was going on Iran. Iran will have a regime change and we can put our puppet on Iran administration head. But this didn't come out. So it was already open first place. Now there was a conflict about opening it. मैं वही तो कह रहा हूँ पेंटा, there are people who solve problem. There are people like Donald Trump who create problem, right, by themselves. Then they try to solve it, and if it is not being solved, they're calling the entire world coward and some other particular words which we cannot describe. So first of all, the Americans were not having any motive to attack on Iran. Right. Second thing, after attacking on Iran, their failure of intelligence have caused them a place where they don't have any exit strategy. तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये नाक का नासूर जैसा हो गया है. सो अब थोड़ा सा अपडेट्स की बात कर लेते हैं. एज ऑफ अप्रैल 2026 6, the conflict between Iran, Israel, and the United States had reached the critical flashpoint after more than 5 weeks of fighting. एक महीने से ज्यादा हो गए, 5 वीक कंप्लीट हो चुके हैं. एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक. ये छठा हफ्ता, थर्ड, सिक्स्थ वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड ये 1.5 महीने के इक्विवेलेंट होता है, 1.5 months, right? The most significant development is a final ultimatum from the US President Donald Trump. This is the seventh ultimatum, huh? How it is final, I don't know, but the majority of a particular media houses are writing it. This is the final ultimatum from the US President Donald Trump, setting up a deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face the catastrophic infrastructure strikes. जैसे इन्होंने पहले किए ही नहीं. Yes, Americans did a lot of war crime in this particular war. They attacked on approximate 400 schools, right, and institutions. They attacked on approximate, what we can say, some 300 civilian infras, right? They attacked on bridges. They attacked on power plant. Uh, they attacked on medical infra.
मेडिकल इंफ्रा एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब जहां मेडिसिन्स बनती थी। दे अटैक्ड ऑन अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट्स क्वाइट एविडेंट, डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है कि भाई जो पाशन इंस्टीट्यूट है, विच इज क्लोज टू 100 ईयर ओल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस, उस पर अटैक किया गया है। द तेहरान यूनिवर्सिटी इज बीइंग डेवास्टेटेड, वहां कुछ बचा ही नहीं है, right? They attacked on the desalination plants. They attacked on the several civilian infra, because of which Iran has lost approximately 2,000 people, and there is a billions of dollar of loss. And this happened without any motive. क्योंकि background में USA and Iran were having peace talks, the mediated by Oman in the Geneva. सो ये एक ऐसा वॉर है जो क्यों स्टार्ट हुआ, पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट पर्टिकुलर आंसर। ओके, टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द current particular escalation or strikes. So an Iranian missile hit the residential building in Haifa, Israel on 5th of April, wounding 4 people. This is a report from Israel, है ना। इसराइल से जो भी पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट जो है वो हमेशा कम करके बताया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ दे आर सेइंग 4 people are being wounded, आई कैन क्लियरली से that there are a lot more people than who are being wounded, and I think some of them may be died as well. Israel strike on Beirut, Lebanon killed at least 8 people and wounded 55 on the April 6th. Lebanon is becoming another particular front like Gaza. Yes, what Israeli did for 2 years in the Gaza was a clear genocide, right? They killed approximate 73, 75,000 people, out of which approximate 17, 18,000 persons were child, right? It's a clear-cut genocide. The similar sort of pattern, right? They are repeating in Lebanon. They are cutting the population of southern Lebanon. जो उनका वो है चिनाली रिवर है, उसके ब्रिजेस वगैरह काट के they are making them isolated, and they are creating it a secure zone where they can deploy their military and they can do genocide, right? So that is another, like Lebanon is becoming another Gaza and nobody is talking about it. Talking about other, US-Israeli strike on the Mashahar petrochemical zone in the Iran killed at least 5 people and injured 170 people. So जो Mashahar जो petrochemical zone है जहाँ पे पेट्रोलियम डिपो था, वहाँ पे यूएस इजरायली एयर फोर्सेस ने अटैक किया, वहाँ पे आग भी लगी, देयर आर 5 people dead, 170 injured. फिर there is an aircraft that is being downed. So US F-15E strikes Eagle and A-10 Warthog जो है उनको कल मतलब अटैक किया गया। जो F-15E है वो तो ईरान के सेंट्रल ईरान वाले रीजन में गिरा। यहाँ आने के पहले देयर वाज अ न्यूज कि सेकंड पायलट इज बीइंग रेस्क्यूड, बट अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बट एक पायलट जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, सो दैट रेस्क्यू मिशन इज स्टिल ऑन अकॉर्डिंग टू माय सिनेरियो, राइट। Talking about others, Iran has intensified the strike on US-Israel in the Gulf state. Kuwait reported significant damage to its power water desalination oil plant with a drone and missile attack. Abu Dhabi and Bahrain have reported the intercepted attack caused by the fire in the industrial site. So, if you will see closely, ना, तो अपने पास जो countries है Gulf region में, which includes Kuwait, right, Qatar, right, UAE, and Bahrain. So the Bahrain was formerly part of Iran, बाद में उसको अलग किया गया. Right. On the other hand, these 3 countries, they have the military bases of America, and this is the same particular countries, the same bases जहाँ से ईरान पे अटैक हो रहा है. So ईरान जो है वो retaliatory attack कर रहा है on these country just to make sure कि they have stopped supporting the American interest. But ये country नहीं मान रही. There are certain news from UAE that they are happy for that continuation of war and no ceasefire, no peace talk. And they want Americans to like obliterate Iranian regime once for all. तो कहीं ना कहीं ये एस्केलेशन अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। खैर, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो ट्रम्प्स की ट्यूसडे डेडलाइन है ना, उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। डेडलाइन टू ट्यूसडे 8 p.m. ईस्टर्न टाइम अप्रोक्सीमेट, दैट इज 3:30 a.m. वेस्टर्न ऑन द वेंसडे देहरान। हमारे यहाँ शायद सुबह 5 बज रहे होंगे उस टाइम पे, right, to Iran to reopen the Strait of Hormuz. He threatened that the failure to comply will result in destruction of Iran's power plant and bridges, and a move he described power plant day and bridge day. मतलब he is the president of United States.
मतलब ये आदमी प्रेसिडेंट है, ये एफ वर्ड यूज कर रहा है, बी वर्ड यूज कर रहा है, एंड ही इज like actually threatening to kill power plants and bridges, which is actually directly the war crime. Where is UN? I don't know. Mm, no, no, no. Prerna, you don't need to learn all the missiles name. I don't think कि मिसाइल का नाम पूछा जाएगा, राइट? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो पूछा जाएगा. So you can completely like ignore it. Now, Iranians defiance, है ना? Tehran has officially rejected the ultimatum, calling it a helpless and unbalanced. Iranian officials warned that they will respond in kind to any infrastructural attack claimed by the and claim that strait remains open to the world but closed to the Iran's enemies. राइट, उन्होंने वापस वही चीज दोहराई कि दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है बट ईरान के दुश्मनों के लिए नहीं है. और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो अल्टीमेटम है ये हेल्पलेसनेस दिखाती है एंड कंप्लीटली अनबैलेंस्ड है. एंड ईरान इज दी नो Iranian are the not like not the only one who's calling it helplessness, frustration and other particular term. Even the American experts, American defense expert, former employees of American military, former employees of intelligence, they are calling it frustration, they are calling it helplessness, they are calling it that the Trump did not have any idea about Iran. Right. On the other half, they are calling the NATO countries ki आओ help करो, and NATO countries are not at all helping Iran. And some of the NATO countries have criticized the language he used for threatening the Iranians. Right. तो ये एक particular चीज है, and like I'm not sure, but 99% chances are there in coming time NATO will not be like aligning with US interests because of Trump only. If there is a change in the power in the coming election, that is definitely going to happen क्योंकि इस लास्ट टर्म में ट्रम्प का दो ही टर्म में प्रेसिडेंट हो सकते हैं. देन डेफिनेटली नेटो के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक पर्टिकुलर नया सिनेरियो जो है क्रिएट होगा. सो एक्सपर्ट्स आर कॉलिंग कि नेटो को भी ये खत्म किए दे रहा है. I think he's gone mad, and he also knows that this is going to be his last term. Why he's concerned about anything? You can say this. मतलब ही इज प्रोवाइडिंग द इनसाइडर इंफॉर्मेशन, सो मार्केट मैनिपुलेशन करता है बातें बोल के. अभी व्हेन वी आर डिस्कसिंग, अभी अमेरिका में कुछ देर में मार्केट खुलने वाला होगा, तो देयर आर 99% चांस ही इज गोइंग टू कम आउट of nowhere and he will start talking about कि there is a peace talk going on, we are doing great, we are we are going to have a very soon a ceasefire, a complete ceasefire, complete opening of Strait of Hormuz, जिससे मार्केट थोड़ा सा बैलेंस हो जाए. बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेटेजी कि मंडे मॉर्निंग को ये ऐसी हरकतें क्यों करता है. गेटिंग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट पे बात कर लेते हैं. द गैस प्राइसेस, यूएस के अपने एवरेज गैस प्राइस जो है $4.018 पर बैलन हो गए हैं. दिस इज हाईएस्ट सिंस 2022. है ना? ये कब? जब हम कोविड वाला टाइम देख रहे थे. राइट. यस. मार्केट वॉलेटिलिटी भाई साहब अलग अलग लेवल पे अलग अलग अगर देखा जाए तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड के मार्केट दे बोथ आर कोलैप्सिंग. राइट. द फ्यूल प्राइस, द एवरेज ब्रेंट पर्टिकुलर जो क्रूड ऑयल होता है, जो रेफरेंस होता है, वो कुछ $115 पर बैरल हो चुका है. एंड द ओवरऑल एवरेज फ्यूल प्राइस पर डॉलर पर बैरल अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $112 पर बैरल पहुंच चुकी है. एंड इफ दिस कंटिन्यूज, right, then it will reach to 120 130 billion sorry dollar per barrel, though there are some particular fuel of different countries which have already reached over there. टॉकिंग अबाउट इंडियाज इकोनॉमी के इम्पैक्ट, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 है उसमें द इकोनॉमिक वॉच जो है, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक वॉच, उन्होंने वार्न किया है कि persists, it could have a 1 percentage point of India's GDP and increased the retail inflation by 1.5%. क्या चीजें महंगी होती हुई ऑलरेडी दिख रही हैं? The answer is yes. Right. Fruits, vegetables, daily use items, they are getting costly on everyday basis. राइट. फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. अभी तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं थैंक्स टू इलेक्शन. राइट. जब तक इलेक्शन है तब तक आई डोंट थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल टेक अ रिस्क टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइस. है ना? बोथ द साइड एंड ऑपोजिशन और करंट रूलिंग गवर्नमेंट की, दोनों की है. सो लेट्स प्रे गाइस कि बिफोर इलेक्शन ये वॉर रुक जाए, नहीं तो मित्रों बहुत महंगा पेट्रोल मिलने वाला है.
एनर्जी क्राइसिस की अगर बात करें तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस have been approximately $111 per barrel due to the continuous blockade, right? And the WHO reported 20 healthcare fatality facilities in Iran, including the historic Pasha Institute in Tehran, right, have been heavily damaged or rendered inoperable by the strikes. Nuclear concern. Iran warned the radioactive contamination risk after the strike near the Bushehr nuclear plant, killing a guard and damaging the support building. So, bhaiya, Israelis and Americans, they are not even thinking about it. That if the radiation goes off, it can harm a particular other क्या कहना चाहिए, countries and other countries people as well. राइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बट ये कहीं नहीं सुन रहे हैं. खैर, दिस वाज द वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट. ओके, खैर, लेट्स कम बैक टू द अनदर टॉपिक. ओके, प्रेरणा. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026. राइट. यस. जो 20th of March होता है ना, 30 मार्च की अगर बात करें, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. एंड 20th of March को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. Right. So in the 2026 report, Finland secured the top spot, right, for the ninth consecutive year with the score 7.764 out of 10. This latest edition was released on this International Day of Happiness, and the theme was happiness and the social media. Right. मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, there was some detailed reporting by the writers and some other particular website. तो उन्होंने बताया why they added social media. ये social media is actually causing some damage in happiness of the people. हाँ, क्योंकि people see social media post of other people and they will like they have good life, but those posts are not at all reflecting the correct mental and other state of that particular person, that is for sure. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पार्ट है, बट दे आर डूइंग ग्रेट. ठीक है. सो अब आते हैं रिपोर्ट्स में कुछ बेसिक फाइंडिंग की तरफ जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सीन है. सो फिनलैंड रिमेन्स वर्ल्ड्स हैप्पीस्ट कंट्री फॉर द नाइन्थ कंसेक्यूटिव ईयर, right, followed by the Iceland in the second rank and Denmark in the third rank. Costa Rica emerged as the standout performer, rising for the fourth place from the 23rd rank, while Israel ranked eighth. I'm not sure why Israelis are so much happy. Comparison between each other. Yes, definitely, Pedna. Comparison is one of the reason why we are actually not happy. है ना, we have unique life, we have unique particular individual, we are unique individual. So comparing it with others, that can cause some harm. Fair. Afghanistan remains one of the like the unhappiest country globally, right? 147th rank जो है अफगानिस्तान को मिला है. No wonder why. है ना, वहाँ पे तालिबान का राज है. There is no freedom for women. There is no freedom of expression. Education is restricted. Political growth is restricted. Some other particular thing. So yes, definitely, Afghanistan has reason to stay on the unhappiest country in the world, followed by the Sierra Leone, right? Sierra Leone from the early days of civil war, जो 30 years, 35 years पहले से start हुआ था, 40 years पहले से, उसके कारण आज भी परेशान है and आज भी one of the unhappiest country है. Malawi is there. Amongst the BRIC nation, China ranked in 65th. China is the happiest country in the BRICS nation, followed by Russia 79th and Iran 97th. India का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है दोस्त. All right, moving on to the next one. So, from the second consecutive year, no English speaking country featured in top 10. Yes, so कोई भी English speaking country जो है वो top 10 में नहीं आई है. Notably, न्यूजीलैंड जो है 11th है, आयरलैंड 13th है, ऑस्ट्रेलिया 15th, यूएस 23rd, कनाडा 25th and यूके 29. मतलब इंग्लिश जहां से ओरिजिनेट हुई वो खुद 29th पे. इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 116th आउट ऑफ 147 countries, showing a marginal improvement from 2025, that is 118th position. So last year हम 118 पे थे, थोड़ा सा ग्रो होकर 116 में हुए थे. दैट डजंट मीन कि हम बहुत हैप्पी. अगर हम आसपास पड़ोसियों से बात करें तो नेपाल इज इन 99th रैंक, पाकिस्तान इज 104th रैंक, है ना. पाकिस्तान और नेपाल हमसे ज्यादा खुश है, while बांग्लादेश इज 127 एंड श्रीलंका इज 134, और ये हमसे लोअर है, मतलब ये हमसे कम खुश है. So this is not something जो कि celebrate करने वाली चीज है कि yes we improve. We still have neighbors which are more happy.
I thought gold price will be very high because of the war, but not getting that much high. Any reason? But see, it all depends upon the market condition and coming recession. Recession is being predicted. So अभी के टाइम पे लोग जो है वो गोल्ड को इसलिए लोअर रखना चाहते हैं द मार्केट एंड द लीडर्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वो कर पाए, जिससे रिसेशन के टाइम पे उनको लोड ना हो, इसलिए थोड़ा सा प्राइस कम है. नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. ठीक, स्टार्ट करते हैं क्या कहानी है इसकी. सो देयर इज अ कंट्री नोन एज, आवर नेबरिंग कंट्री है भूटान. सो वी कैलकुलेट आवर जीडीपी, है ना, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द जीडीपी. Okay, while the Bhutan started, what we can say, calculating its growth in GNH, that is gross national happiness. हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज के कंबाइन वेरिएज की. वो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की. सो भूटान इंस्टीड ऑफ जीडीपी डिसाइडेड टू चूज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एंड वो अपना जो इकोनॉमिक एंड अदर ग्रोथ है वो हैप्पीनेस में कैलकुलेट करने लगे. एंड दिस वाज हैपनिंग फ्रॉम लाइक लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम, और उसी पर्टिकुलर दिन के हिसाब से 20th मार्च को डिक्लेयर किया गया एज एन इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. राइट. यस. और ये जो है दुनिया भर में क्या कहना चाहिए, फंडामेंटल राइट है कि सब खुश रहें, ह्यूमन बीइंग खुश रहें. इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको डिक्लेयर किया हुआ. द डेट 20th March was chosen because it's coincide with the vernal equinox. A time or day and night are approximately equal length everywhere on, symbolizing the universal equality and balance as well. तो एक तो उन्होंने भूटान को ऑनर करने के लिए किया, दूसरा उन्होंने इक्विनॉक्स वाले दिन किया. राइट. तो ध्यान रखना है जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, जो 2012 से मनाया जा रहा है, एंड दिस वाज proposed by the Bhutan because they choose a gross national happiness instead of GDP, that is gross domestic products. Okay, so this was the three major topic for CLAT जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके नोटबुक में होना चाहिए, जिसके बारे में नोट्स आपको रेडी रखने चाहिए. And I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. For the regular current affairs update, every morning 8 a.m. हम द हिंदू एनालिसिस लेके आते हैं. तो अगर आपको डेली अपडेट चाहिए हो उस न्यूज़पेपर का एंड रेलेवेंट न्यूज़ का, यू आर वेलकम. राइट. एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. And I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next session. Till then, see ya, guys. Good day.